our society. Dr. Bhimrao Ambedkar, born on 14th An Indian jurist, economist, social reformer and a political leader who led the drafting committee of the Indian Constitution. But do we know about the hardships he faced throughout his life, even in his childhood? Bhimrao Ambedkar faced many difficulties as he always faced caste discrimination in both his childhood and adulthood because he belonged from a Dalit family and Dalits were considered untouchables. He also faced a lot of financial issues as he belonged from a socially and economically disadvantaged group. Despite his great passion for learning, he was not allowed to enter inside the classroom and sit with others. मास्टर जी ये हमारे साथ नहीं बैठ सकता है, ये अछूत है। अच्छा, भीमराव यहाँ से उठो और कक्षा के बाहर बोरी लेके बैठ जाओ। Even though he knew the correct answer, he was not allowed to solve that on the blackboard. शिवाजी महाराज कहाँ पैदा हुए थे, कौन बताएगा? ये किसने बताया? अरे भीमराव, तुम देखो, वो कक्षा के बाहर बैठकर भी पढ़ रहा है और तुम कक्षा के अंदर बैठकर भी पढ़ नहीं पा रहे हो। ये तो मैंने कल ही पढ़ाया था। Despite all these challenges he had to face in his educational journey, he still focused on his studies and went to London for higher studies. Even there in London, he faced a lot of racism by the people dwelling there. When he desperately needed to drink water, a peon would pour it from a higher point as untouchables weren't allowed to either touch the water or the vessel that contained it. Once, on his way back home, when he saw a well and tried to drink the water, a crowd saw him and beaten him up. Hairdressers even refused to cut his hair as he was an untouchable, so his aunt would cut his hair at home. These were some of the bitter experiences Mr. Ambedkar had to face. अब मैं 32 डिग्री लेने वाले 9 भाषाओं के ज्ञाता 54 विषय के मास्टर भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए गए कुछ योगदान बताना चाहूँ। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की। भारतीय संविधान के बनने में उनका मुख्य योगदान था। वे पीएफ और ईएसआई दिलाने वाले थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल भी दिया। उन्होंने हर एम्प्लॉय को 12 घंटे से काम घटाकर 8 घंटे का काम दिलवाया। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, समाज में सम्मान और मैटरनिटी लीव्स भी दिलवाए। उन्होंने भारत के हर एक नागरिक को मतदान करने का अधिकार भी दिया। Absolutely, Dr. Bhimrao Ambedkar played a significant role in the reshaping the Indian society, advocating whispered and social change and justice. His contributions, such as being the chief architect, guidance for the combat and caste inequality. Dr. B.R. Ambedkar criticized religion texts for their propagation of untouchability. Ambedkar played a significant role in the drafting the Indian Constitution and campaigned the causes of the insignificant communities. Under the leadership of Dr. B.R. Ambedkar, who is also known as Father of Indian Constitution, drafting committees are formed. Ambedkar's most important contribution for the causes of the women, property and marriages is established the laws of the maintenance of the women. Dr. B.R. Ambedkar campaigned against the caste system. He began movement to start open drinking water resources for all, not just for higher class people. Ambedkar launched a fully fledged movement for the list during the 1930s. He was so determined to make his dream of making this country's people live without any discrimination or any injustice. So he fought against every hardship he had to live with. Today, our diverse country, India, is living under the law of Constitution, which is drafted by Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar and his committee. Today, we are together in the school, living without any injustice and discrimination. Even though he left this world, but his struggles and idea of equality will never be forgotten. He will always be remembered as the father of Indian Constitution globally. Bhimrao Ambedkar was
a person with brilliant mind. People always underestimated him, but he came out to be among the most well-renowned freedom fighters of our country. His academic excellence is still the best example for determination and resilience. He was always bullied by people belonging to higher castes. This does not end here. He was even bullied in foreign because of his Indian race. He will always be known globally as father of Indian Constitution. Be educated, be organized, and be agitated. Leaders from India, as per the CBSE guideline and National Education Policy, 100 days reading campaign was started in 2022. Amongst that, 14th week activity was Inspiration from Leader. Inspiration from Leader was shared with students to motivate and inspire them. Good morning, students. Today's program presented by Library Department, specially to inspire students with inspirational leader from India. These personalities are shared with intention. You should compare your life with those leaders during those days, how they survived. Dr. B.R. Ambedkar, who was not allowed to sit inside the class, whose copies was not corrected by teacher, even those untouchables were not asked questions, they were not allowed to answer during the class. In such situation, in such humiliation, he had shown and proved himself. This is the one of the example during such hurdles and such humiliation he had proved, and he has written the Constitution of India. Constitution of India लिखते वक्त आपको पता है 60 countries contribute Constitution he had studied, और 60 देशों का Constitution पढ़ के उन्होंने इंडिया का biggest handwritten Constitution in 2 languages. तो ये Constitution लिखते वक्त आपको पता है he was the chairman of Constitution Committee. बाबा साहेब आम्बेडकर जिस हालात में पढ़ते थे, उनकी सिचुएशन और अपनी सिचुएशन अगर हम कंपेयर करें तो 51 सब्जेक्ट में मास्टर्स होना, 32 डिग्रियां लेना, 9 भाषाओं में विशारद होना, नॉट ए इजी टास्क. ही हैड प्रूव्ड हिमसेल्फ. एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. जब वो अपने पढ़ाई के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए थे, तो वहां पे उन्होंने इस तरीके से पढ़ाई की कि उनको 24 घंटे में से वो 20 घंटे अपने पढ़ाई पे इस्तेमाल करते थे. आप देखिए अपनी पढ़ाई करते वक्त हम कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, हम कितना टाइम अपने पढ़ाई पे देते हैं. तो देखिए बच्चों, 24 घंटे में से 18 से 20 घंटे पढ़ने वाला इंसान जिसने 2 लाख किताबें पढ़ी, और देखा जाए तो उनका पर्सनल कलेक्शन 50,000 किताबें थी उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में. तो डियर स्टूडेंट्स, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में उनका पोर्ट्रेट लगाया है, क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी और सिंबल ऑफ नॉलेज करके पहचाने जाते हैं. पढ़ाई करते वक्त उनके पास टाइम की कमी थी, तो उन्होंने लंच टाइम भी नहीं लिया. किताब में एक ब्रेड का पीस छिपा के वो लाइब्रेरी जाते थे, और लाइब्रेरी में फूड आइटम्स कैरी करना अलाउड नहीं था. एक दिन लाइब्रेरियन ने उनको ब्रेड खाते वक्त पकड़ा गए. तब उन्होंने बताया कि सर मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं लंच टाइम जाऊँ, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं कैंटीन की फैसिलिटी जितना जो फूड चार्जेस है मैं अफोर्ड करूँ. तो जितनी मुझे स्कॉलरशिप मिली है उसमें मेरा एजुकेशन प्लस मुझे यहाँ सर्वाइव करने के लिए बहुत मुश्किल है. तो इन दिनों में मैं इसी के सहारे कर रहा हूँ. तो एक ब्रेड के पीस पे उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की. तो आप देखिए इतने फैसिलिटी के साथ हम कैसे पढ़ रहे हैं. हमेशा देखा जाता है बच्चों को ग्राउंड जाने की डिमांड होती है. महाराष्ट्र के लीजेंड सारे ग्राउंड से ही नहीं आए बच्चों, उन्होंने लाइब्रेरी की किताबें पढ़ी. लाइब्रेरी के दरवाजे अब सबके लिए खुली है, और KVS library policy, national education policy and CBSE's calendar
reminds us to keep conducting such activity for children's overall development. आपने इन बच्चों का परफॉर्मेंस देखा, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने विदाउट पेपर स्क्रिप्ट तैयार की है, प्रिपेयर की है और डिलीवर की है। बताइए, बच्चे अगर स्टेज के सामने आते तो यहाँ बात करने वाले की हालत पता है उस इंसान को जो यहाँ बात करता है। 100% पढ़ के आया तो 50% यहाँ से डिलीवर होती है बात, आधी तो वो भूल जाता है। लेकिन बच्चों ने इतने कम टाइम में 2-3 दिन में स्क्रिप्ट तैयार करके बिना देखे अगर किया है तो उनका एक टॉपिक प्रिपेयर हो गया। सो लाइब्रेरीज एक्टिविटी ऑलवेज कीप्स ट्राइंग फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एंड CBSE लेटेस्ट पैटर्न जो है आपका क्वेश्चन पेपर का, उसके हिसाब से वो आपको बस कितना लिखते हैं याद करके वो देखना नहीं चाहता। CBSE would like to see the overall development of child by critical thinking, creative thinking, analytical skill and conceptual clarity. आप बिना देखे यहाँ एक्सप्रेस कर पाए, लिख पाए, ये आपकी डेवलपमेंट है। These are the skills developed among the students through co-scholastic activities. Thank you, students. Take inspiration from Dr. B.R. Ambedkar, who survived during such hurdles and he proved himself and he had written the biggest constitution of India. Thank you. You must have enjoyed this program.